Hello, my dear students. How are you? I hope you all are doing well. You are watching my channel Smart Gen 20, जहाँ पे हम रोज़ वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं फिज़िक्स के रिलेटेड, और हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट। जैसा कि आप जानते हैं, फ्रॉम फ्यू डेज़ कश्मीर में सर्दी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन इस सर्दी का बेनिफिट उठाइए। कम्बल एक ओढ़ के, a cup of tea and do your study, because जब आप समर में आओगे, समर में काफ़ी सारी डिस्टर्बेंसेस, आपको स्कूल भी अटेंड करने हैं, तो आज इन विंटर के दिन जितना अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, इट इज़ बेटर टाइम टू डू। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वाचिंग माई चैनल स्मार्ट जन 20, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और जितना हो सके इन वीडियोज़ को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस स्टूडेंट, जो हमने पिछले लेक्चर कंप्लीट किए हैं उन लेक्चर को आप देखिए, ताकि आपको जो हमारा टुडे लेक्चर है मिरर फार्मूला और ऑल्सो कॉल्ड मिरर इक्वेशन, ये अच्छा आसानी से आपको समझ में आ जाए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई लेक्चर्स वेरी नाइसली। अगर कहीं पे कोई डाउट हो रहा है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके डाउट्स क्लियर करूं। मूविंग टू आवर टॉपिक विच इज़ मिरर फॉर्मूला। समटाइम्स इसे मिरर इक्वेशन भी बोला जाता है। फ्रॉम सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस क्वेश्चन इज़ ऑफ 10 मार्क्स वेटेज। 12th में पूछा जाता है, 10th में पूछा जाता है। और अगर मैं कहूँ, ये जो मिरर फार्मूला है, इसकी जो इक्वेशन हमें मिलती है, उस इक्वेशन को, और जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन, आई विल कॉल्ड दीज टू इक्वेशंस द हार्ट ऑफ द लाइट चैप्टर फॉर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। इफ़ यू वांट टू डू न्यूमेरिकल ऑन दिस चैप्टर, तो आपको एक अच्छे से ये मिरर फार्मूला समझ आनी चाहिए। सो प्लीज़ बियर अटेंशन। Today we will derive this mirror formula for the concave mirror. What is mirror formula? Actually ये है क्या? ये जो मिरर फार्मूला है, ये हमें रिलेशन देती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ये तीनों हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हाट इज इमेज डिस्टेंस एंड व्हाट इज फोकल लेंथ। इन तीनों में आपस में कौन सी रिलेशन है, उसी रिलेशन को फॉर्मुलेट करते हुए हमारे पास एक इक्वेशन आती है, 1/u 1/v is always equal to 1/f. Here u represents the object distance, v represents the image distance, and f represents the focal length. So 1/distance plus 1/image distance is equal to 1/focal length, and this is called our mirror equation और मिरर फार्मूला। ये तो हो गई इसकी फार्मूला, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला कहाँ से आई, इसको आज हम डिराइव करेंगे। सो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा बेसिक फंडा है वो क्या है, रे डायग्राम। सपोज दिस इज आवर कनकेव मिरर, क्योंकि हम आज इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं कनकेव मिरर के लिए, जिसका आउटर साइड कोटेड होता है। दिस इज कॉल्ड एपर्चर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रा करूँ, सपोज दिस लाइन बी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चा, वेरी नाइस, एंड दिस पॉइंट is called pole. Suppose we have an object here A, B, ठीक है। यहाँ से एक रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इस तरह से इसको रिफ्लेक्ट होना है, ठीक है। यहाँ से और एक रे में ड्रा कर रहा हूँ पोल पे, ठीक है, और इस पोल से इस रे को रिफ्लेक्ट होना है लाइक दिस, and one more ray which may come from
center of curvature, this will be our focus, ठीक है। तो ये तीनों रे कहाँ पे मिलती है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश, ये इस ए की इमेज है, ठीक है बच्चा। बाय ज्वाइनिंग दिस ए डैश विद द प्रिंसिपल एक्सिस हमें इमेज मिलती है बी डैश। नाउ वी हैव टू डिराइव दिस रिलेशन 1 over u plus 1 over v is equal to 1 over f from this ray diagram. Question may be asked like that. Derive the mirror formula, mirror equation by drawing the ray diagram and show that 1 over this and this. There are a couple of ways in which this question may be asked. So starting this question, let us see these two triangles, triangle 1 and triangle 2. यहाँ पे बचा क्या है? इसको प्रूव करने के लिए हमें जो कंसेप्ट लग रहा है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। 9th क्लास में आपने सीखा होगा कि ट्रायंगल्स आपस में अगर सिमिलर हो या सिमिलर होने के लिए कौन सी कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन ईदर साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और वहां से एक हम एंगल से एक रिलेशन और थ्योरम डिराइव करते हैं कि इफ टू एंगल्स are equal then the given triangles are said to be similar. तो ये वाला कंसेप्ट हमें यूज करना है यहाँ पे। एंड इफ टू ट्रायंगल्स आर said to be similar, the ratio of their corresponding sides is always equal. ये आप मैथ में फाइंड करोगे, ये आपको मिलेगा, ठीक है। विच मीन्स इफ आई एम हैविंग टू ट्रायंगल्स, साइज में कोई छोटा कोई बड़ा, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इफ टू एंगल्स ऑफ two triangles are equal, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, these are said to be similar. And if these are similar, corresponding sides means this side and this side, ratio of this AB over DE will be equal to ratio of other sides, that is AC. If I am taking AC, I have to take the corresponding side, that is DF, will be equal to BC over EF. This is the mathematical concept जो आपको बच्चा पहले ही पता है। इस कंसेप्ट को यूज करेंगे हम कहाँ पे? इस रे डायग्राम में। अगर मैं इस रे डायग्राम को यहां से उठाकर यहां पे आपको दिखाऊं, वी विल गेट दीज ट्रायंगल्स लाइक दिस। These triangles are like this, and this is B dash, this is A dash, this is our C, this is A, and this is B. यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हो, this angle is 90 degree and this angle is also 90 degree. Here 90, 90, right? This angle and this angle will be equal because you know when two lines are intersecting at any common point, the opposite angles are always equal. This angle 2 will be equal to angle 2 dash, this angle 1 will be equal to angle 1 dash. So from here we can say that this triangle and this triangle are similar, this triangle and this triangle are similar. So starting our derivation from the concept that here as triangle A dash B dash C is similar ABC because angle ABC is equal to angle A dash B dash C dash, A dash B dash C dash. Why? Both are equal 90 degree. Also angle C is equal to angle C. Okay, right? So these two triangles are similar because of this reason.
So here we can conclude that ratio of their corresponding sides, that is A dash B dash over AB, will be equal to BC B dash C over BC. Here A dash B dash this side over AB this side will be equal to B dash C this side over this side. Here I can show you clearly this side over this side will be equal to ratio of this side by this side by the theorem of similarity. Now coming forward, we can say that implies that A dash B dash over AB will be equal to this BC. Now see this B dash C, B dash C, B dash C. If I will take this whole line here, see bacha, this is C, this point is C, here another point is B dash, this end point is P. If I will say here this BC, if I will take the whole length, that is PC, C, whole length PC, I will subtract इस whole length से मैं ये वाली length, कौन सी length बच्चा, ये वाली length मैं इससे subtract कर रहा हूँ, that is PB dash, right? तो I will get B dash C. What it means, if I will cut this length, I will get this B dash C. So we can substitute here B dash C dash, इसके बदले में लिख सकते हैं क्या, PC minus PB dash over similarly this BC. If I will draw this line here, here is B, another point is C, and this is P. If I will take the whole length, that is PB, इसमें से subtract करूं CB और BC, subtract करूं this PC, whole length में से ये वाली length मैं subtract अगर करूं तो कौन सी length बच जाती है, BC. We will get the BC. That means this BC will be equal to the whole length, that is PB minus PC. Got it? So substituting here by इस BC के बदले हम लिख सकते हैं PB minus PC. Very nice. Moving ahead. Now, as you all know, from this pole to this F, this distance is called focal length, represented by F. From this pole to this A dash, this length is called image distance, that is represented by V. From this pole to the center of curvature here, we can say that this distance is actually R, that is radius of curvature, and accordingly from this pole to this point B, we can say that this is our object distance. By substituting these values here, we will get this PC, P to C, what it means, radius of curvature, that is R, C bacha, that is R, minus PB dash, PB dash, that is image distance, V, over PB, PB, that is our object distance, U, minus again PC, PC, that is our radius of curvature, that is R. But it is not enough. Why? जो मैंने पहले ही बोला है, by measuring any distance we have to follow the sign convention. यहाँ पे पिछला वाला लेक्चर में जो हमने बोला था कि sign convention, all the distances are measured from pole. Okay, we have measured, right? And if our measurement is opposite to this incident ray, हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है ये, और हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो ऐसे मिल रही है, दैट इज
totally opposite. In case of opposite, we are given the negative sign to our measurement. R देखो पोल से इधर तक, that is opposite to this incident ray, तो हमारा ये जो R आएगा negative. Similarly, this V will be negative, U will be negative, and this R will be negative. Here, simplifying more, we will get minus of R, minus and this minus will become the plus V over this minus U, minus and minus will become plus, and we will get R. This will be equal to A dash B dash over AB. So here we get our first equation, right? Very nice. Coming to the next part, that is, take the two triangles, this A, B, P and A dash, B dash, P. If here I will shade these triangles, these two triangles we have to take. That is triangle 3 and this whole big triangle, that is triangle 4. यहाँ पे मैं ड्रा करूं आपको समझाने के लिए. These triangles are like this. These triangles are like this. This is A dash, B dash, P, A, B. ठीक है बच्चा? Here, same the concept of similarity. This angle 90, this angle 90. This angle will be equal to this angle. Why? Angle of incidence, angle of reflection. Okay, angle of incidence, angle of reflection. R. So we can say that also because triangle A dash B dash P, triangle A dash B dash P is similar to triangle ABP, triangle ABP. Why? Because this angle, I will say angle B in shortcut, will be equal to this angle B dash. Why? Both equal to 90 degree, right? Here, this angle is equal to this angle. That means angle A dash P and B dash. A dash P and B dash. This angle, right? This angle is equal to angle APB. APB. Why? I is equal to angle I is equal to angle R. So these two triangles are similar. When these two triangles are also similar, we can take the ratio of corresponding sides will be equal to ratio of their corresponding sides will be equal. तो यहाँ पे फिर से हम बच्चा वही अप्लाई कर सकते हैं. This A dash B dash over this AB, A dash B dash over AB, ये हमें निकलेगा किसके बराबर? This PB dash over PB from the big triangle, PB dash this over PB dash this one. So by simplifying this, PB dash will be equal to whole PC. Here is C, here is again B dash, here is P. This PC whole length, if subtracted by this PB dash, we will get CB dash. तो इस PC, CB, PB dash, right? PB dash. No, here. Sorry. यहाँ पे हमें तो किसी को सब्स्टिट्यूट ही नहीं करना है. Because PB dash, we know that. What is this distance? This is image distance already. So we can replace this PB dash by V. And this PB, P to B, this is actually object distance. But here, according to sign convention, this will be minus, this 2 will be minus. So we will get this equation A dash B dash over AB will be equal to
V over U, right? This will be our equation B. Here you can say that from equation A, equation B, A dash B dash AB, A dash B dash over AB means left hand side is equal, which implies that right hand sides will be equal. So I can rub here. If this part is visible to you, we can say that, let me rub this portion. I will move this equation here, that A dash B dash over AB has come out minus of R plus V over minus of U प्लस R. ये क्या थी हमारी इक्वेशन ए, ठीक है। तो हमें ये दो इक्वेशन यहाँ से डिराइव करके आ गई, तो इनको तो यहाँ पे बच्चा फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी वी गेट, क्या हमें मिल रहा है, left hand equal, so right hand will be also equal. This minus of R plus of V over minus of U plus of R will be equal to V over U, V over U. Here simplifying further, I can take this U here and this V here. We will get U minus of R plus of V is equal to, this V will be multiplied by this side minus of U plus of R. Here U into R minus of UR, U into V plus of UV is equal to V into minus of U, that is minus of UV, plus V into R, that is VR. Here you can say that this UV, this UV, this is UR, this is VR. If I will take this UV to the left hand side, as this is minus, ये माइनस वाला यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस. सो आई विल गेट UV plus this UV is equal to, when I will take this UR to the right hand side, ये माइनस वाला UVR बनेगा प्लस. सो VR ऑलरेडी है प्लस this UR. So here I can conclude this UV will be equal to twice of UV is equal to V of R plus U of R. यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा. From here बस हमने क्या करना है, take, say this is equation C. So we can say that dividing U, V, R, object distance, image distance, radius of curvature on both sides of equation C, we will get. ठीक है बच्चा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें डिवाइड करना है UVR, राइट हैंड साइड में भी UVR को डिवाइड करना है. यहाँ पे ट्वाइस ऑफ UV डिवाइडेड बाई UVR इज इक्वल टू दिस VR, इसका भी हो जाएगा डिवाइड UVR प्लस UR, इसका भी डिवाइड हो जाएगा क्या बच्चा, UVR. Now simplifying, U cancel, V cancel, here we will get 2 over R, this V cancel, R cancel, 1 over U plus this U cancel, this R cancel, 1 over V. Also you know that जो पिछले लेक्चर में हमने derive की थी, that our focal length is always equal to 1/2 of radius. Substituting the value of R, which will come out twice of F. Here we can say that twice of F, 1 by U plus 1 by V. Here we can implies that 2 and 2 cancel, 1 over F is equal to 1 over U plus 1 over V. This is our mirror equation or mirror formula.
सो आपने देखा ये मिरर फॉर्मूला कहाँ से आई। व्हाट हैपन्स एक्चुअली, हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन रही है बाय टेकिंग दिस पैरेलल रे this ray from the center of curvature and this ray from the pole of the mirror. Here we can see ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है बच्चा। ये जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, इन दो ट्रायंगल्स को हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर। We are proving that these two triangles, triangle 1 and triangle 2 are similar because of their angles are equal. Taking the ratio of their corresponding sides, we are getting the first equation जो आपने देखा। फिर हमने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, that is angle 3 and angle 4, इनको भी आपस में सिमिलर किया, ठीक है, because their two angles are also equal। फिर हमने क्या किया, दो इक्वेशंस को देख के लेफ्ट हैंड साइड उनका इक्वल था, फिर राइट हैंड साइड को भी इक्वल होना ही था। तो उस इक्वेशन को जो हमें मिली उसको सिंपलीफाई करते हुए हमें यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको सिंपलीफाई किया, हम यहाँ पे पहुंचे। इसको फिर ऑन बोथ साइड्स हमने डिवाइड किया, किससे, यूवीआर से। यूवीआर से जब डिवाइड किया तो फर्दर वी रीच हियर। ओके, यहाँ पे बस r को रिप्लेस किया, जो कि ऑलरेडी हमें पता है r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f, इसके बदले ट्वाइस ऑफ f किया, 2 कैंसल, और हमारी रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला मिल गई। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर मिरर फॉर्मूला फॉर द कनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट मीन्स sometimes you are asked derive mirror formula for concave mirror for the point object, for the point object। यहाँ पे हमने पूरा ऑब्जेक्ट लिया था, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में ही कि आप मिरर फार्मूला को डिराइव करो, लेकिन फॉर टेकिंग द पॉइंट ऑब्जेक्ट, या कोई टीचर आपको उस तरह से डिराइव करके दिखाता है, तो डोंट कंक्लूड दैट दिस इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग, और दैट इज राइट और दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे मैं उस पार्ट को भी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सपोज वी आर हैविंग ए मिरर and this is our principal axis, let this is our point object, any ray coming to this point object will be reflected here। अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे इसने हिट किया वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करूँ, ठीक है, वो नॉर्मल कहाँ पे मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। Suppose this is the focus. It is not necessarily that this reflected ray will be reflected through the focus. So by marking the points, let this is our object, point object A, let it hit at B. This is center of curvature, this is focus, and this is pole. तो उस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन को आप किस तरह डिराइव कर सकते हो। सपोज आपको बस एक ही चीज करना है, सपोज दिस इज एंगल अल्फा एंड दिस इज एंगल बीटा, एंड थर्ड जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, लेट दिस इज गामा। इतना ही करना है, इस एंगल को कंसिडर अल्फा करना है, इसको बीटा, इसको गामा। इसको तो हमें पता ही, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी आल्सो थीटा, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बोथ आर इक्वल टू थीटा। अब क्या करना है, इफ यहाँ पे और एक मैथमेटिकल कंसेप्ट आपको चाहिए इसको प्रूव करने के लिए, विच यू विल जो आपने सीखा होगा 10th क्लास की जियोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिकली दैट tan ऑफ एनी एंगल, इफ आई विल टेक द tan ऑफ अल्फा, ठीक है, and also for small aperture we are considering this curvature as straight, means this may be like this। Suppose this is the P dash, ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है A B P dash और P whatever।
ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चा, इसका जो एंगल है अल्फा यहाँ पे बन रहा है, तो tan जब हम लेते हैं दैट इज मीन्स टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, जो इसका एंगल है, इसका जो कर्वेचर बन रहा है, अगर उस पर मैं टेंजेंट खींचूं तो उसकी फॉर्मूला आपको 10th क्लास में मिल जाएगी, दैट इज अपोजिट साइड टू दिस एंगल। जिस एंगल को का आप tan ले रहे हो, टेंजेंट ले रहे हो, उसका अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड जो है दैट इज बी पी डैश, राइट, बी पी डैश ओवर पी बी। सपोज दिस इज द हाइट, दिस पी डैश बी बी एच, ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं B तक डिस्टेंस लूँ दैट विल बी आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट, और अगर मैं इस पॉइंट तक, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट D, इस तक अपनी मेजरमेंट लूँ फ्रॉम पोल, दिस विल बी द V इमेज डिस्टेंस, राइट, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड अप टू C दिस विल बी अवर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता है कि जहाँ पे इमेज बन रही है दैट इज इमेज डिस्टेंस, जहाँ पे रेडियस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ यू आर ओनली कंसिडरिंग दिस हाइट, दिस हाइट जो कि यहाँ पे मैंने ड्रा की, उसको आप कंसिडर कर रहे हो h बस। तो इसका अपोजिट जो आप अगर मैं ये जो ट्रायंगल ले रहा हूँ इस तरह का ट्रायंगल, ठीक है बच्चा, यहाँ पे अल्फा बन रहा है, यहाँ पे हाइट है, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इस का tan जो होगा अपोजिट साइड टू दिस एंगल ओवर द एडजेसेंट साइड टू दिस एंगल, that is this tan will be equal to h over u. Taking the tan of this beta 2, this tan of beta will be here again this height over image distance, because angle is here, opposite side is h and its adjacent side is v. Also taking the tan of, well, gamma, here we can say that tan of gamma h, that is opposite side, over the radius, adjacent side is radius. These are the actual formulas if we are taking the tan of all these three angles. लेकिन जो हमें पता है कि अगर हम कोई छोटा सा मिरर ले रहे हैं तो उसका एपर्चर बनेगा स्मॉल, तो कंसिडरिंग फॉर स्मॉल एपर्चर, स्मॉल एपर्चर के लिए ये जो tan अल्फा होता है दैट मीन्स टेंजेंट, इसका वैल्यू अल्फा के बराबर ही निकलता है, दैट मीन्स अल्फा विल बी इक्वल टू h बाई यू, एंड दिस बीटा विल बी इक्वल टू h बाई v, h ओवर v, एंड दिस गामा विल बी इक्वल टू h ओवर r। बस इसमें इतना ही याद रखना है, बाकी कोई कुछ मुश्किल है ही नहीं, आपको बस एक ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लेना है कि I have to take the tan of this angle and this angle, and this you should suppose this is the height, this is the image, this is the radius of curvature, this is the object distance, and for small aperture this tan of alpha is always equal to alpha, tan of beta is equal to beta, tan of गामा इज इक्वल टू गामा। ये कंसेप्ट आप मैथ में 10th के मैथ में सीखोगे इन द ट्रिग्नोमेट्री। नाउ वी कैन से दैट, ओके, if I will take this triangle A, B and C, to make you understand, let us draw this triangle here. इस ट्रायंगल को यहाँ से उठा के यहाँ पे हम बनाते हैं। This triangle is like this, this, ओके बच्चे, ये हमारा A, ये है B, ठीक है, और यहाँ पे C है, ये है एंगल अल्फा, ये है एंगल थीटा, और यहाँ पे जो बन रहा है गामा, इसमें 9th क्लास का कंसेप्ट, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल एंड दिस एक्सटीरियर एंगल विल बी सम ऑफ द इंटीरियर टू एंगल्स। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि फ्रॉम ट्रायंगल
what? A, B, C, A, B, and this C. A, B, C, gamma, which is exterior angle, will be equal to sum of interior angles, that is alpha plus theta, right? Alpha plus theta. Let this be equation first. Now taking this triangle, this was triangle first, take this triangle number second, which will be like this, and like this. Here is gamma, here again is theta, here is beta. This is C, this is B, and this is triangle 2. This was triangle. Here again beta is the exterior angle. Will be equal to sum of the all two interior angles. So from triangle BC, this is D. BCD. Again, beta is equal to angle gamma plus angle theta. Angle gamma plus angle theta. This is equation second. Right? This is equation second. Now we have to solve these two equations. Here is also theta, here is also theta. To omit these thetas, we can subtract these two equations. If I will subtract, अगर मैं इस equation में से ये वाली इक्वेशन निकालता हूँ, ठीक है बच्चा, तो मुझे क्या मिलेगा? ये थीटा और थीटा ओमेट हो जाएगा, ये थीटा और थीटा ओमेट हो जाएगा, which means by subtracting equation first and second, we will get this gamma minus beta will be equal to alpha minus gamma. This theta minus theta will be 0, which is not supposed to be right here. Now we can put these values. We know here alpha is this, beta is this, gamma is this. So we can put the value of gamma, which is h by r, right? Minus beta is equal to h over v is equal to alpha is equal to. Here we can more simplify this. If I will take this gamma to this side, this gamma will be positive. So twice of gamma will be equal to this minus of beta will be plus, that is alpha plus beta. Now put these values. This will be twice of gamma will be replaced by h by r, right? Alpha will be replaced by h by u, which we have taken from this, that is h over u, h over u plus this beta h over v, h over v. Now according to sign convention, this r will be negative, distance is taking from pole, this u will be negative, this v will be negative. All three distances are falling from this side. Measurement is taken from this side. हम measurement pole से ले रहे हैं, image distance, radius of curvature, object distance, incident ray के opposite में, ठीक है? तो negative sign सबको आएगा. Here we can see h, h and h. This h will be cancelled on both sides. Now we will get twice of r is equal to 1 over u plus 1 over v, because this minus and this minus will also be cancelled. Now changing this r's value, we know that r is equal to twice of f. Here we can get twice of f is equal to 1 over u plus 1 over v, which implies that 1 over f is equal to 1 over u plus 1 over v, and this is our mirror formula. अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मिरर फॉर्मूला को डिराइव करो कॉनकेव मिरर के लिए कोई भी मेथड, दिस इज मेथड नंबर सेकंड. चाहे आप ये मेथड यूज करो, जो पिछला वाला मेथड हमने यूज किया उस मेथड को यूज करो, दोनों मेथड करेक्ट है. लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है
derive mirror formula particularly for point object, then you have to use this derivation. And if you are asked that derive the mirror formula for concave mirror for the object AB, there will be mentioned AB, then you have to derive that equation by taking the object here. This is point object. When it is said to be object AB, that means object will be like this. Then you have to apply the first method. यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं. सो इन टुमारो लेक्चर वी विल डेराइव दिस मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर 2, फिर आगे चल के मैग्निफिकेशन, फिर आ जाएगा हमारा न्यूमेरिकल पार्ट. फिर हम एक दो लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे सो दैट हमारी जो मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन की फार्मूला आ जाएगी उसके कंसेप्ट सॉलिड हो जाए. और फॉर आईआईटी जेई नीट एस्पिरेंट्स के लिए न्यूमेरिकल्स करने आसान हो जाए. दिस इज द ऑल फॉर द टुडे. सो बेस्ट ऑफ लक. Have a nice day. Take care of yourself and your parents. Okay, bye.